Good morning, students. Welcome to the online class of School of Open Learning. Myself, GUNEET KAUR, and I'll be teaching you company law. As most of you know me, as we have already discussed 3 chapters of the company law, and today we will start the 4th chapter, which is Memorandum of Association. So, like always, we'll be keeping last 10 minutes for your doubts and queries and anything that you want me to repeat again. So, last 10 minutes is for you. You can post your queries in the question and answer section. So, let's start. Before starting the next chapter, which is Memorandum of Association, let's quickly revise the last chapter, which was Formation of Company. So let's first revise what was formation of company. So as you can see it on the screen, in the last chapter we talked about that there are two important stages for the formation of company. What are these two important stages? Number one stage is promotion and number second stage is incorporation. Now to form a company, the first step is promotion. Promotion means conceiving an idea or making sure that everything is perfect. We have a name of the company, having a registered office, thinking about the location for the company, and all the necessary documentation that needs to be done before the formation, before the incorporation of the company is promotion. And for that we have a promoter whom we compensate, whom we pay salary or commission or shares in any form. So for doing promotion, we have a promoter who do all the things. And after the promotion stage, we have the second stage that is known as incorporation. So making your company having a legal entity, having a perpetual succession is known as incorporation. Incorporation of a company means that now your company has a legal entity. It is registered under the Indian Companies Act. It has all the rights of a company. uh, it could be a private company or a public company. So incorporation means that your company has now a legal entity. It's a separate legal entity. It is properly registered. So uh, I think we are left with one last section of formation of company. So let's first do that. Certificate of incorporation. Now let's understand what is certificate of incorporation. So once your company is registered under the Indian Companies Act, you receive a certificate. It is a legal document stating that this is your company, this is the name of your company, it is registered under the Companies Act. Like it is a proof that your company is has been incorporated or your company is registered. So of incorporation is a legal document relating to the formation of a company which confirms the name by which the company is registered under the Companies Act and date of incorporation. So basically certificate of incorporation आपका एक legal document है, ठीक है, which relates to the formation of company, जिसमें company का name registered होता है and जिस दिन आपकी company incorporate हुई वो date भी mention होती है. So it's a legal document. It's a proof that your company it's a proof that your company has been registered. अब इसका मतलब क्या है कि वंस यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो वो क्या डिपिक्ट करता है. It states that your company is in existence from the date mentioned in the certificate. Second, it grants legal personality, corporate existence, and perpetual succession. Third, the subscribers to the memorandum together with such other person as may from time to time becomes member of the company. The memorandum and article of association become binding upon the members in the company as if they have been signed by the company and by each member. So basically जब आपका certificate of incorporation आपको मिल जाता है तो एक वो proof हो जाता है that your company is now has a legal existence. जो भी date mention थी, your company has legal personality, corporate existence है और company के जो सारे features होते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तब
इशू होगा जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स, जैसे जो आपका मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो सारे मेंबर्स अग्री करते हैं, बाइंडिंग अपॉन है, सब पे एप्लीकेबल है, सबने साइन करा हुआ है। सो ये था हमारा कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। नेक्स्ट इज वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. So, certificate of incorporation is a legal evidence with regard to the registration and formation of a company. Section 7, subsection 6 of the Companies Act 2013 provides that where at any time after the incorporation of a company, it is proved that the company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or misrepresentation or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company by any fraudulent action, the promoters, the person named as the first director, and the person making declaration shall be liable for such action. So it means कि आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जो आपका लीगल डॉक्यूमेंट जब आपको इशू हो जाता है बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, बट बाय एनी टाइम, मतलब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, एंड आफ्टर दैट अगर प्रूव होता है कि जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा गया उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई वो इनकरेक्ट थी, फॉल्स थी, कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस से कंपनी फॉर्म हुई या कोई फ्रॉडुलेंट एक्शन यूज हुए, तो इन दैट केस जो भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं, बिकॉज प्रमोटर्स थे, दे स्टार्टेड द बिजनेस, उन्होंने ही सारी डॉक्यूमेंटेशन करी है, सो दे विल बी हेल्ड लायबल, द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल द पर्सन. अगर आपको याद हो इन द लास्ट क्लास हमने पढ़ा था, जो अगर कंपनी में जो भी हम एक्सपर्टीज यूज करते हैं, लाइक अगर कोई सॉलिसिटर को एम्प्लॉय करते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर करते हैं, तो उन सबसे हम एक डिक्लेरेशन लेते हैं. तो उसका यही पर्पस होता है कि अगर कंपनी में कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है या कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन यूज होती है, तो उसके रिगार्डिंग दे ऑल विल बी liable for such action. So our next topic is commencement of business, section 10A. So a company incorporated after November 1, 2018, after having the commencement of company ordinance and having a share capital, shall have to fulfill the following procedural requirement before commencing any business. So once your company is incorporated, अब आप अपना business commence कर रहे हो, commencement of business, तो उसको start करने से पहले आपको दो procedural requirements हैं जो follow करनी होंगी. Number one is फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन टू द आरओसी. एक आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ठीक है, सो उस डिक्लेरेशन में आप क्या बताओगे, stating that every subscriber to the memorandum has paid the value of shares agreed upon by them at any time of making such declaration. जैसे अब आपने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आपका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप एक डिक्लेरेशन दोगे कि जितने भी सब्सक्राइबर थे कंपनी के शेयर्स के, उन्होंने दे हैव पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर. सो उसमें हम एक डिक्लेरेशन देंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन करेंगे, जो भी हमारी पब्लिक कंपनी होगी तभी मेंबर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने अपनी वैल्यू पे कर दी है, इसकी एक डिक्लेरेशन विद इन 180 days वी हैव टू गिव to the registrar of companies before the commencement of business. And second procedural requirement is verification of the registered office. The company is required to file with the registrar of companies a verification of its registered office. So you have to verify your registered office, और इसके लिए भी हमें एक रिक्वायरमेंट है जो आरओसी पे फाइल करनी होगी, उनको एक डॉक्यूमेंट देना होगा वेरिफिकेशन का. सो डिफॉल्ट, अगर ये सब चीजें नहीं होती, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय कंपनी इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट, अगर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जो हमने दो रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, अगर कंपनीज डिफॉल्ट करती हैं, दे आर नॉट फाइलिंग द डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, सो इन दैट केस company shall be liable to a penalty of 50,000
and every officer in default with a penalty of rupees 1000 for each day during which default continues may go up to 1 lakh rupees. So पेनल्टी तो है 50,000 की जो पे करनी है, और जो भी ऑफिसर्स हैं इन डिफॉल्ट में उनको भी 1000 पर डे की पेनल्टी है, एंड इट कैन गो अप टू रुपीज 1 lakh. So this is the minimum amount. So this all about फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. तो लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में ये दो स्टेजेस डिस्कस करी थी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन. सो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या है. So today we'll be starting the new chapter, that is memorandum of association. अभी आपने देखा था इस चैप्टर में बहुत बार ये टर्म यूज हुई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. So we have separate chapters on this. So first of all, let's start with memorandum of association, and our next chapter is article of association. So let's start with chapter number 4, that is Memorandum of Association. Let's first understand what is Memorandum of Association. So students, Memorandum of Association is the main document of a company which define its objectives. So आपकी कंपनी का जो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी के कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं, और दे हैव साइंड इट और नॉट. So every main important thing, your purpose, your objectives of your company are laid down in Memorandum of Association. Memorandum of Association is also known as Constitution of the company, since it governs the relationship of the company with outside world. So basically memorandum of the association क्या है, आपकी कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, चार्टर है, मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड है. ओके, सो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कह सकते हैं कि इट इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. It defines as well confines the power of the company. So कंपनी की क्या पावर्स हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होती हैं. If anything is done beyond these powers, that will be ultra vires the company and therefore void. The students, अगर कुछ भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करी गई which is against the memorandum of association. For example, if it is written in the memorandum of association that you have a business of solar power generation, right? And if you are doing any business activity which relates to water generation, just for example, hypothetically socho, so it will be against your memorandum of association, because आपने memorandum of association में लिखा है that your business, that you do a business of solar power generation which is not even closely related to any water generation. So in that case, uh, your activity or business activity will be ultra wires. Ultra wires means जब आप कोई भी transaction करते हो which is against the authority, which is not required to do, which is against the public authority. So in that case वो transaction को void माना जाएगा. So I think before moving ahead, I think आपको ये चीज क्लियर हुई कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है. इट इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के पर्पसेस डिफाइंड होते हैं. तो अब पर्पस क्या है मेमोरेंडम का. सो लेट्स अंडरस्टैंड द पर्पसेस ऑफ मेमोरेंडम. फर्स्ट इज it enables the intending shareholder to know the field of activity or to what purpose his money is going to be used by the company. So basically आपके जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, हु आर गिविंग देयर मनी और इन्वेस्टिंग देयर मनी इन योर कंपनी, सो उनको एक इंफॉर्मेशन मिलती है विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट वेयर देयर मनी इज गोइंग, व्हाट
business is the company is doing, where they are investing their money. उनको एक information रहती है कि हमारा जो हमारी जो मनी है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रही है, क्या पर्पस है कंपनी का, वो क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रही है. Second, anyone who is dealing with the company, not only shareholders, anybody, if जो आपके creditors हैं, suppliers हैं goods के, they also came to know from memorandum of association about the transaction, about the objectives, about the business of the company. So basically, memorandum of association provides information about your business. First, to your shareholders, and second, also provides to your suppliers, your creditors, and all the investors. So memorandum is required to be printed, divided into paragraphs, numbered consecutively, and signed by at least 7 persons in presence of at least one witness who will attest the signature. So आपको क्या करना है कि जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप बना रहे हो, इट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिंटेड. उसको प्रिंट कराना होगा, उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड करना होगा, नंबर्ड कंसेक्यूटिवली एंड साइन बाय एटलीस्ट 7. अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, 7. एंड इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी so minimum members are 2 in the presence of at least one witness, right? And it has to be attested with the signature, sign भी होना चाहिए, because it is a public document. जो ये memorandum of association है, it is a public document, anybody can read it. इट इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन. आप भी किसी कंपनी का MOA आप कंपनी की साइट पर जाके चेक कर सकते हो. इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. सो इसके साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ एक प्रिस्क्राइब फी भी हमें पे करनी होती है. So a company on being required by a member is bound to supply to him with a copy of its memorandum on payment of the prescribed fee. The copy must be sent within 7 days. So in case the company makes default in complying with this requirement, the company and every officer of the company shall be punishable with a fee of 1,000 per day, and which can go up to 1 lakh rupees. So basically जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनको कंपनी लायबल है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू मेक श्योर दैट कि जब उन्होंने अपनी फी पे कर दी है मेंबर्स ने, तो जो कंपनी है वो उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करे. सो विद इन द 7 days द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू रिसीव द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है. अगर कंपनीज डिफॉल्ट करती हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन दे विल बी लायबल फॉर अ फाइन व्हिच इज 1,000 per day and continues up to rupees 1 lakh, whichever is less. Now, the next important topic of Memorandum of Association is Section 4. अभी हमने पढ़ लिया, so far we have studied कि Memorandum of Association होता क्या है. It is the principal document which defines the objectives of the company. It provides information to the investors, to the shareholders, and it is open. It's a public document. It is open for public inspection. Now let's talk about Section 4, which is clauses of memorandum of association. It is very important. There are 6 clauses in the memorandum of association. Is name clause. First is name clause, then is situation clause, third is object clause, fourth is liability clause, and fifth is capital clause, and last one is association clause or subscription clause. So let's first start with the name clause. Students, it's very easy. I'll give you a brief. By name clause, जैसे हमने रूल्स में पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में पढ़ा था, प्रमोशन में, कि जो भी कंपनी का नेम होगा, द नेम ऑफ द कंपनी should not be should not be similar with any other company. It should be a it should have a distinct name. It should not sound like any other company. It should not have a name that is undesirable. And name clause में कि if it is a public company, तो the last word of the company should named with limited. अगर आपकी public company है, say XYZ, so उसका complete name होगा XYZ Limited. अगर private limited है तो उसके last words होने चाहिए XYZ
प्राइवेट लिमिटेड. सो नेम क्लॉज सेज कि ये फॉलोइंग रूल्स हैं जो कंपनी को फॉलो करनी होगी. सेकंड, it should not have any name which is undesirable in the eyes of central government. And third, the name of the company should not violate the provisions of the Emblems and the Names Act. So जो भी हमारा एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट है उसके कुछ प्रोविजंस है. सो जो भी हम नेम अपनी कंपनी का अडॉप्ट करेंगे, इट शुड नॉट violate the provisions, or it should not go against the name of the emblems and name act. D, the name should not connote means suggest government participation. सी स्टूडेंट्स, आप एक कंपनी बना रहे हो, आप उसको नहीं लिख सकते कि ये कंपनी इट्स एन एनजीओ. आप उसको नेम उसका एनजीओ में रजिस्टर नहीं करा सकते, या आप उसके नेम में इंक्लूड नहीं कर सकते वर्ड बैंक और बैंकिंग, XYZ बैंक. if it is not the bank you cannot mention it as a bank because वो फिर डिफाइन करेगा कि इसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है. आप अगर अपनी नॉर्मल कंपनी बना रहे हो तो इधर वो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी. आप ऐसे नहीं उसका नेम रख सकते दैट XYZ बैंक और XYZ कोऑपरेटिव बैंक और XYZ इंश्योरेंस. जो कंपनी का बिजनेस है उसको ही वो डिनोट करे. इट कुड इधर बी अ पब्लिक, इट कुड इधर बी अ प्राइवेट कंपनी. गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन का नोट ना करे, सजेस्ट ना करे. तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि वंस योर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, सो आपका जो कंपनी का नेम है इट शुड बी पेंटेड आउटसाइड योर रजिस्टर्ड ऑफिस. नेम क्लॉज कहता है कि आपका जो कंपनी का नेम है वो आपके ऑफिस के बाहर पेंटेड होना चाहिए और फिक्स्ड होना चाहिए. इट शुड बी रिटन आउटसाइड योर रजिस्टर्ड ऑफिस और wherever you carry your business. Name should be engraved in legible characters. लेजिबल कैरेक्टर्स मीन्स रीडेबल. आपका जो भी नेम होना चाहिए वो बहुत प्रॉपर इंग्लिश में प्रॉपर फॉन्ट एंड टेक्स्ट में लिखा होना चाहिए सो दैट इट इज इजी टू रीड. गेट इट्स नेम, एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस एंड नंबर्स. जो भी आपके ऑफिस डिटेल्स हैं, बिजनेस डिटेल्स हैं, नेम ऑफ योर कंपनी, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, एवरीथिंग शुड बी प्रिंटेड ऑन इट्स बिजनेस लेटर्स. सो आपके बिजनेस लेटर्स पे ये प्रिंटेड होनी चाहिए. नेक्स्ट, इफ देर इज एनी डिफॉल्ट इन कंप्लायंस, अगर कोई भी डिफॉल्ट आप करते हो दैट, जैसे अगर आप अपनी कंपनी के बाहर रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर यू आर नॉट राइटिंग योर नेम, और इन केस योर बिजनेस लेटर्स पे प्रॉपर एड्रेस नहीं है, प्रॉपर नेम नहीं है कंपनी का, देन देर इज फाइन ऑफ ₹1,000 पर डे एंड विच कैन एक्सीड अप टू ₹1,00,000. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट दैट इज नेम क्लॉज समझ आया. Second is situation clause. So situation clause talks about that memorandum of association must state the name of the state in which the registered office of the company is to be situated. So situation clause कहता है कि जो भी हमारा memorandum of association है उसमें जहाँ पर भी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, उसकी स्टेट का नेम मेंशन हो. For example, if your registered office is in Punjab, so your memorandum of association states that your registered office is located in the Punjab. अब ये क्यों जरूरी है? Why it is important? There are two reasons for that. Because it determines the domicile of the company. Domicile means origin, place of birth of the company. So अगर आपका mention है MOA में that your registered office is located in the Punjab, तो इससे हमें पता चलता है that this company is related to the Punjab, it belongs to that state. कंपनी का origin पता लगता है. So this in turn established the jurisdiction of the High Court of the state in which the registered office is situated. Now why this is important to know about the domicile of the company? Because according to that हमें पता लगता है कि company क्या जो अगर पंजाब में फॉल करती है तो वी कैन गो टू द पंजाब हाई कोर्ट. उस स्टेट के कौन सी जुरिस्डिक्शन है, कौन सी अथॉरिटी है जहाँ पर हम जाके उसके कोई भी डिस्प्यूट्स हैं वे रिजॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी इट्स बिलोंग टू हरियाणा, फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट कम टू अ दिल्ली कोर्ट टू रिजॉल्व.
It will first go to the court that is under your jurisdiction of your area. Secondly, it is at the registered office where the company's statutory books are normally kept. अब why it is important, सिचुएशन क्लॉज कहता है कि MOA में ये जरूरी है बताना कि कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, बिकॉज जहाँ पर कंपनी सिचुएटेड है नॉर्मली वहीं कंपनी की स्टैट्यूटरी बुक्स होती हैं. इट इज easy to see the statutory books to communicate with the company. अगर कंपनी को कोई नोटिस भेजना है, obviously nowadays you can send it on email, but in the old days we used to, not in old days, we do mostly today also we send things by post, so courier करा सकते हैं if we know the location. So that was all in the situation clause. Now the next is objects clause. So object clause कहता है कि in the memorandum of association it should mention, it should lays down the objects of the company. तो जो भी company का memorandum of association है, it should state, it should lays down the objectives of the company. क्या company के objectives हैं, क्या कंपनी के पर्पस है, एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट इज लायबिलिटी क्लॉज. सो लायबिलिटी क्लॉज टॉक्स अबाउट द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी कितनी लायबिलिटी है. अगर जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय देयर शेयर्स, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर, लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो अगर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, इट मींस मेंबर्स सिर्फ अपने अनपेड पोर्शन के लिए लायबल हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमने शेयर्स 50,000 के शेयर्स अपने एक शेयर होल्डर को दिए हैं and he has paid 25,000 for that. Now he is only liable to the company for the unpaid share. 50,000 के shares उन्होंने हमसे खरीदे, 25,000 he has already paid to us. So unpaid amount कितना है, 25,000 which he is required to pay. So company के member की liability अगर limited by shares है तो वो सिर्फ unpaid value के लिए ही limited है members. Case of one person company, a company में there is only one member, so the name of the person who in the event of the death of the subscriber shall become the member of the company. So one person company में क्या होता है कि if that member की death हो जाती है in the event of the death of the member of the or the subscriber, तो वो जिसका भी name nominate करते हैं that person shall become the member of the company. So liability clause generally talks about the liabilities of the members of the company. जो members हैं company के उनकी क्या liability है. Next is capital clause. So capital clause, memorandum of association of a limited company having share capital must also state the amount of share capital with which the company is to be registered, which is usually authorized or nominal capital. So it states जो भी company का capital clause है वो कहता है कि कंपनी में कितनी शेयर कैपिटल होएगी, कितना अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होना चाहिए जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होगी, राइट. सो कैपिटल क्लॉज स्टेट्स की जो भी कंपनी का MOA है उसमें मेंशन होना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी का रजिस्टर हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट इज एसोसिएशन क्लॉज. So this clause states that the person subscribing their signature at the end of the memorandum of association are desirous of forming themselves into an association in pursuance of the memorandum. So basically association clause कहता है कि जो MOA पर memorandum of association हमने समझा कि it has to be signed by their subscribers. So उनके साइन का क्या रेलेवेंस है, क्या इम्प्लाई करता है, इम्प्लीकेशन है कि these all subscribers are desirous, they voluntarily want to form themselves into association, they are forming a company, they all are associated with each other, they are willingly, they are voluntarily doing that.
So full description, address, occupation, etc. of the subscribers and witness must be written. So every detail, full description, address, occupation of the subscriber, everything must be written. Everything needs to be written in the memorandum of association under the association clause. So I hope students आपको ये part clear हुआ कि what are the clauses of uh, memorandum of association. So let's continue with the next topic, that is alteration of memorandum of association. So students, so far we talked about ki what are the clauses of memorandum of association. Now, how can we alter these clauses, or what are the rules for altering them, or what are the rules for alteration of memorandum of association? So first is alteration in the name clause. For example, अब आपने name clause में पढ़ा that company का proper name होना चाहिए, it should not be undesirable, and every company must have its name affixed outside the registered office. It should be printed on the business letters. Now, if you want to make any changes in the name clause, अगर कोई भी alteration हो रही है, so how can we do that? So section 13, subsection 2 talks about alteration in the name clause. So the name of the company can be changed anytime by passing a special resolution at the general meeting of the company and getting the approval of the central government in writing. So आप company का name अगर आपको change करना है, you can do that at any time by getting the approval of the central government in writing. So for that you need approval of the central government. ओके, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर आपको एनी टाइम कंपनी का नेम चेंज करना है, हो सकता है प्राइवेट कंपनी इज कन्वर्टिंग इनटू अ पब्लिक कंपनी, सो यू कैन डू दैट बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड फॉर दैट यू नीड एन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. Now, second point is alteration in the situation clause. So section 13 talks about कि अगर आपको situation clause में कुछ alteration करना है, for example, situation clause में company के registered office की बात हो रही थी. So for example, you are shifting the location of your company. अगर आप अपने company का registered office की location change कर रहे हो, so in that case again a special resolution has to be passed and आपको एक notice देना होगा to the registrar within 15 days of change who shall record the same. So अगर ऐसे हो रहा है आप कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी लोकेशन चेंज कर रहे हो, so you can also do that. So उसके लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है and within 15 days. So इसके अंदर आपकी बेसिकली डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि आप आउटसाइड द लोकल लिमिट्स जा रहे हो या आप स्टेट चेंज कर रहे हो. आपका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, यू आर शिफ्टिंग इट टू अ डिफरेंट स्टेट. सो इन दैट केस आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है एंड कंफर्म करना है बाय द रीजनल डायरेक्टर. ओके, सो वन स्टेट से अगर आप यूनियन टेरिटरी में शिफ्ट कर रहे हो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, सो देन उसके लिए भी सेपरेट प्रोविजंस हैं. So these are different prescribed rules जो आपको go through करने होंगे. Next topic is alteration in the object clause. So object clause defines the objectives of the company. So section 13 subsection 18 talks about that a company which has raised money from public through prospectors and still has any unutilized amount of the money so raised shall not change its objectives for which it has raised the money through prospectus unless. So students sometimes क्या होता है कि जैसे आपने public से money raise करी, आपके पास now you have some unutilized amount. आपके पास कुछ unutilized amount है, आपका जो भी objective था उसके लिए जितने funds required थे आपने वो invest कर दिए. आपके पास now कुछ अमाउंट अनयूटिलाइज्ड है, कुछ मनी आपके पास सेपरेटली पड़ी है, तो फॉर दैट आप कुछ अपना डिफरेंट बिजनेस नहीं करने लग सकते. यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स बिकॉज फिर जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कुछ बिजनेस में अनयूटिलाइज अमाउंट है, नाउ यू डिसाइड कि मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेता, आई विल डू समथिंग एल्स, तो ये अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा. इट विल बी अगेंस्ट योर बिजनेस objective.
इन दैट केस आपको क्या करना होगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, एक नोटिस देना होगा जिसमें आप मेंशन करोगे कि आपको इतनी टोटल मनी रिसीव हुई, इतना आपका यूटिलाइज्ड अमाउंट है एंड दिस इज योर अनयूटिलाइज्ड अमाउंट एंड दीज थिंग्स यू हैव टू मेंशन the justification for alteration or change in the objectives. So अगर आपके पास अब अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, so उसके लिए आप बताओगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितना अमाउंट आया, कितना अनयूटिलाइज्ड है, एंड नाउ टू इन्वेस्ट योर अनयूटिलाइज्ड अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी अदर बिजनेस जिसके लिए आप अपना ऑल्टर कर रहे हो ऑब्जेक्ट क्लॉज, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे बिजनेस के उसको चेंज कर रहे हो बिकॉज यू हैव सम अनयूटिलाइज्ड amount. So for that, the details as may be prescribed in respect of such resolution shall also be published. आपको एक special resolution pass करना है जिसमें सारी details mention करनी है and then you need to take approval of the shareholders of the business. ठीक है? If there is any dissented shareholders, जैसे सब लोग अप्रूव नहीं होते दैट आप कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स बाद में ऑल्टर कर रहे हो तो आपको उसके लिए अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए. So if they are not approving, if some of the shareholders are not approving that alteration, तो उनको एक opportunity भी देनी होगी to exit by the promoters. So this process of passing a special resolution and mentioning about the utilized and unutilized amount, ये जो सारी चीजें हैं वो एक public company को करनी जरूरी है because उन्होंने पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, सो दे नीड टू इन्फॉर्म द पब्लिक बिफोर मेकिंग एनी ऑल्टरेशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज. इफ इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, अगर आपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू मनी रेज नहीं करा, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, देन यू कैन चेंज योर ऑब्जेक्टिव एनी टाइम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. तब इतना प्रोसेस नहीं है इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी. Next topic is alteration in the liability clause. For example, at any time जो कंपनी के मेंबर्स हैं they say कि अभी तक तो हम हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स थी, हमने जितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करा हुआ है हम अनपेड वैल्यू के लिए लाइबल हैं. इफ एनी टाइम अगर जो मेंबर्स हैं दे से कि हमें जो हमारी जो लाइबिलिटी है या डायरेक्टर्स कंपनी के से कि हमें अपनी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड करना है, तो ये भी पॉसिबल है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. आप एक पास करोगे in altering the liability clause of the memorandum of association and we are making the liability of directors or any one of director or manager unlimited. So liability भी members की change हो सकती है by passing a special resolution. Next is alteration of the capital clause. So जो हमारा capital clause था वो बताता था कि कितनी कैपिटल, कितनी ऑथराइज कैपिटल कंपनी की इन्वेस्टेड है, कितनी रजिस्टर्ड कैपिटल है कंपनी की. अगर हमें समटाइम्स अगर हमें उसको ऑल्टर करना है, पॉसिबल है ना कि जो भी आपकी शेयर कैपिटल थी से 50 लाख रुपीस में आपने रजिस्टर करी कंपनी विद ऑथराइज शेयर कैपिटल, नाउ यू आर इंक्रीजिंग योर ऑथराइज शेयर कैपिटल टू 1 लाख रुपीस और रिड्यूसिंग इट. सो जो भी वेरिएशन है उस चीज को आप मेंशन कर सकते हो and you can do that by altering the capital clause. So alteration of the capital clause हम जब करेंगे उसमें क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकती है शेयर कैपिटल, डिवाइड कर सकते हैं शेयर कैपिटल, हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स थे उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, देन कन्वर्ट कर रहे हैं फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक को और रिकन्वर्ट कर रहे हैं स्टॉक इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स. स्टूडेंट्स दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. जो हमारे स्टॉक होते हैं और जो हमारे शेयर्स होते हैं, आपको पता है शेयर क्या होता है, जो भी कंपनी की कैपिटल होती है उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को डिवाइडिंग द कैपिटल ऑफ द कंपनी इनटू स्मॉल यूनिट्स इज नोन एज शेयर. अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक रेफर्स टू पार्ट ओनरशिप इन 2 और मोर कंपनीज. अगर आपके पास आप कहते हो दैट आपके पास स्टॉक्स में शेयर्स पड़े हैं, तो इसका मतलब है स्टॉक इज कि आपके पास बहुत सारी कंपनीज का है स्टॉक मींस सम शेयर्स आपके पास रिलायंस के हैं, सम स्टॉक्स आपके पास टाटा कंसल्टेंसी के हैं, सम स्टॉक्स आपके पास इन्फोसिस के हैं. Now if you say that you have shares means that single ownership, आपके पास shares है तो shares terms means कि आपके पास सिर्फ एक single कंपनी के shares हैं.
ठीक है। सो शेयर एज अ नेम सजेस्ट सिंगल ओनरशिप एंड स्टॉक मींस, वैसे ये दोनों टर्म्स बड़ी रिलेटेड हैं, सब इंटरचेंजली यूज करते हैं, बट रियल मीनिंग मींस स्टॉक मींस दैट यू हैव पार्ट ओनरशिप, आपके पास थोड़ी थोड़ी ओनरशिप है डिफरेंट कंपनीज की, बट एज शेयर मींस सिंगल ओनरशिप। देन नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आप कंपनी के शेयर कैपिटल को भी रिड्यूस कर सकते हो ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज में। सो इसके लिए भी कुछ मेथड्स हैं दैट यू विल गो थ्रू। Variation in the rights of shareholders. So, whereas share capital of the company is divided into different classes of shares, the right attached to the shares of any class may be varied with the consent in the writing of the holders of not less than 3/4 of the issued shares of that class or by means of a special resolution passed at a separate meeting. So, liability clause में जो shareholders के rights हैं वो भी वेरी कर सकते हैं इफ दे वांट टू चेंज देयर राइट्स, लाइक उनके पास अगर 3/4 शेयर्स थे उसको वो रिड्यूस कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें भी अगर कोई वेरिएशन है तो वो भी हम ऑल्टर कर सकते हैं इन द कैपिटल क्लॉज। सो नाउ स्टूडेंट्स there is one difference between reduction of capital and diminution of capital. So ये बहुत interchangeably these two terms are used and this is the last topic we'll do for today. Next जो भी last हमारा section है doctrine of ultra wires वो हम next class में continue करेंगे। अभी ये distinction को देखते हैं कि what does reduction of capital means and what is diminution of capital means. So reduction of capital means कि आपकी जो भी authorized, subscribed और paid capital है आप उसको reduce कर रहे हो amounts to reduction of issued, subscribed or paid up capital. So it means जैसे आपने अगर 50 लाख के शेयर्स इशू कर दिए हैं, ठीक है, ऑथराइज कितनी थी आपकी, से ऑथराइज कैपिटल थी 80 लाख, इशू कितनी करी आपने 50 लाख के शेयर्स इशू करे, दैट इज योर्स एंड इट इज सब्सक्राइब और पेड अप। ये 50 लाख के शेयर्स आपने इशू करे, उतने ही सब्सक्राइब कर लिए शेयर होल्डर्स ने एंड पेड अप कर दिए। सो जब आप अपने सब्सक्राइब और इशूड शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो, आपने 50 लाख के शेयर्स इशू करे थे उनको ही आप बोल रहे हो दैट नाउ आई वांट टू रिड्यूस इट टू 40,000। 50 लाख की इशू करे तो यू आर रिड्यूसिंग इट टू 40 लाख रुपीज। तो जो जितनी आपने इशू कर दी है उसको रिड्यूस करना, दैट मच कैपिटल को रिडक्शन करना, इशूड कैपिटल को रिड्यूस करना इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड डिमिनिशन ऑफ कैपिटल इज अमाउंट्स टू रिडक्शन ऑफ द अनइशूड शेयर कैपिटल। अभी आपने उस अमाउंट ऑफ कैपिटल को इशू नहीं करा तो जब उसको रिड्यूस करते हैं तो हम उसको डिमिनिशन बोलते हैं। डिमिन्यूशन इज reduction of the unissued share capital and reduction is reduction of issued share capital. So दोनों केसेस में रिडक्शन में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा बिकॉज ये कैपिटल ऑलरेडी इशू कर चुके हैं एंड फिर रिड्यूस कर रहे हैं। डिमिनिशन में अनइशूड शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं तो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे। रिडक्शन में इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज पहले जो आपके मेंबर्स थे आप उनको इशू कर चुके हो शेयर कैपिटल, तो अब उनका जो इंटरेस्ट है वो इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली उनकी शेयर होल्डिंग कम हो रही है। डिमिनिशन में सिंस इट इज रिडक्शन ऑफ अनइशूड शेयर कैपिटल तो जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका कोई भी इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं हो रहा। So students, this was all about the difference between reduction of capital and diminution of capital. We are just left with one topic, one main topic that we will continue in the next class. And now we can discuss your queries or anything that you want me to repeat or any doubt related to memorandum of association, related to the clauses of memorandum of association and related to alteration of these clauses. So you can post your queries in the question and answer section. I will explain again the association clause. So students, association clause क्या कहता है, वो बताता है कि since जो आपका memorandum of association है उसमें आपके जितने भी subscribers हैं उन्होंने sign करा है, because memorandum of association valid कब होगा, जब properly वो signed होगा subscribers से।
So जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज प्रॉपरली साइंड, इट मींस वो क्या डिनोट करता है कि जो भी आपके मेंबर्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद कंपनी, they are voluntarily associated with the company, they have decided to form an association with the company, and they all are working together, they are acting upon the objectives of the company. एसोसिएशन क्लॉज आपके सब्सक्राइबर्स के लिए डिफाइन करता है, उनका रिलेशनशिप डिफाइन करता है. इफ यू कैन सी द नोट्स, तो एक बार नोट्स में हम देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन. Association clause. This clause states that the persons subscribing their signature at the end of the memorandum are desirous of forming themselves into an association in pursuance of the MOA. So ये यही डिनोट करता है कि जो भी पर्सन सब्सक्राइब कर रहे हैं या जिनकी भी सिग्नेचर्स हैं एट द एंड ऑफ द मेमोरेंडम, they are desirous, they are willingly, they want to associate with the company according to the memorandum of association. एक members की consent को बताता है. तो I think association clause सबको clear है. Let me know अगर आपको दोबारा से समझना है association clause. And book that you will be referring is Anil Kumar. I inform this almost every time. Anil Kumar for Company Law, Taxman Publication. What are preliminary and provisional contracts? So students, preliminary contracts are contracts that are formed before the incorporation of the company. Okay, and they are before even the commencement of the business. So अभी जब आपका incorporation नहीं हुई, company not yet लीगल स्टेटस नहीं आया, उससे पहले के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो प्रिलिमिनरी हैं. नाउ प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि आपकी कंपनी जो है, जो टाइम पीरियड है इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट के बीच में, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गई है बट अभी कमेंस नहीं हुई, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, उनके बीच का जो टाइम गैप है उसके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म हुए हैं दे आर प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट. एसोसिएशन क्लॉज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. Provisional contract. This was the last topic of formation of the company. मैं एक बार आपको फिर से repeat कर देती हूँ. See students on the screen, last topic is provisional contract. So these are the contracts entered into by a company having share capital between the date of incorporation and date on which the company has fulfilled the requirement of section 10A on commencement of business. These are valid contracts if the company meet the requirement and would be non-operative in case the company failed to do so. स्टूडेंट्स, जो एक टाइम गैप है बिटवीन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई एंड जिस दिन कंपनी का बिजनेस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हुआ, सो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी सेक्शन 10 ए की. ये जो स्टूडेंट्स हमने दो रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी आज की क्लास में कि दैट दे हैव टू फाइल अ डिक्लेरेशन विद इन 180 days दैट कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, एंड जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उन्होंने अपने सब जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अपनी वैल्यू ऑफ शेयर्स पे कर दी है. और जो सेकंड प्रोविजन क्या थी, वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस. तो जब ये दोनों रिक्वायरमेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स इन ड्यूरेशन के बीच में बनते हैं बिटवीन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड द डेट ऑन विच द कंपनी हैज फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, सो ये जो दोनों डेट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर होते हैं दीज आर नोन एज प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट. अगर सेक्शन 10 ने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं देन ये जो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे टर्न इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. सो जब तक सेक्शन 10 ने ऐसे जब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती, इससे पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी एंटर होती है तो वो सारे प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. बट वंस the requirements of section 10A are fulfilled, these contracts are converted into your valid contracts. Yes, your understanding of association clause is clear.
So, what is associate company and dormant company? Dormant company is inactive company that is already formed for your future projects. Dormant company आपकी वो company होती है जो सिर्फ आपकी future projects के लिए form करी होती है, उसका उसमें कोई भी transactions involve नहीं होती. So, inactive company को आप dormant company कह सकते हो. तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस कि स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है कि आपको अप्रूवल चाहिए होता है. Approval could be of your central government or approval could be of the shareholders. Ordinary resolution means that you do not need that much documentation, you do not need that much of approval. So that's an ordinary resolution that you can do it yourself और जो भी company के directors हैं. अगर कोई भी चीज स्पेशल रेजोल्यूशन हो रही है, it needs lot of documentation, it needs lot of approvals. I think one last doubt that I'll take upon is variation in the right of shareholder. So let's go to the notes and read that portion again. Variation in the rights of the shareholder. Where a share capital of the company is divided into different classes of shares, the rights attached to the shares of any class may be varied with the consent and the writing of the holders of not less than three-fourths of the issued shares of that class, or by means of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the issued share of that class. If provisions with respect to such variation is contained in the MOA, in the absence of any such provision in the memorandum of articles. तो students basically क्या है, जब कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है. डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स मींस इट कुड बी कि आपके पास कुछ फूड सेक्टर के शेयर्स हैं या कुछ आपके पास ब्लू चिप शेयर्स हैं. तो जो उनके राइट्स हैं, द राइट्स अटैच टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास में बी वेरीड. अगर उस क्लास के जो राइट्स हैं, राइट्स का मतलब जो भी शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास शेयर होल्डिंग है उन शेयर्स की, तो उसमें भी वेरिएशन पॉसिबल है, उसमें भी ऑल्टरेशन पॉसिबल है. कैसे ऑल्टरेशन हो सकता है, जो भी शेयर्स के राइट्स हैं विद द कंसेंट इन राइटिंग, उसके लिए जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी राइटिंग में कंसेंट चाहिए. इन रिटन दे हैव टू कंसेंट, गिव अप्रूवल of not less than three-fourth of the issued shares of that class. सो बेसिकली अगर आपको इसमें वेरिएशन चाहिए अपनी होल्डिंग में, सो अगर आपको 50,000 शेयर इशू हुए हैं तो उसका नॉट लेस देन थ्री-फोर्थ, सो मिनिमम थ्री-फोर्थ शेयर की आपको कंसेंट देनी है. दैट आउट ऑफ दिस पोर्शन में थ्री-फोर्थ शेयर, दैट्स द मिनिमम थ्री-फोर्थ, इतना जो होना चाहिए आपके इशू, जो भी आपके पास उस क्लास के शेयर्स हैं उसमें आपको वेरिएशन चाहिए. Consent in writing चाहिए, consent in writing of the holders of not less than three-fourth of the issued shares of that class or by means of special resolution. It means अगर आपके पास कोई एक क्लास के शेयर्स हैं, उस टोटल क्लास के थ्री-फोर्थ शेयर्स के जो भी होल्डर्स हैं, तो मीन्स आप देख लो सिर्फ थ्री-फोर्थ, लाइक 3:4 की कंसेंट अगर राइटिंग में होगी, देन ओनली शेयर होल्डर्स की जो भी डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स की होल्डिंग है उसमें वेरिएशन पॉसिबल है. अगर 1/4 की कंसेंट नहीं है, देन वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर इज नॉट पॉसिबल. Provided that if variation by one class of shareholders affect the rights of any other class of shareholders, the consent of three-fourths of such other class of shareholders shall also be obtained and the provisions of this section shall apply to such variation. देखो students, अगर आपको variation चाहिए अपने शेयर होल्डिंग में, शेयर्स में, तो थ्री-फोर्थ शेयर्स जिनके पास है, इट कुड बी लॉट ऑफ मेंबर्स. थ्री-फोर्थ शेयर होल्डिंग सिर्फ एक पर्सन के पास नहीं होगी, बहुत सारे मेंबर्स के पास होगी. सो उनकी राइटिंग में कंसेंट चाहिए दैट दे वांट वेरिएशन, दे वांट टू चेंज इट. Where the holders of not less than 10% of the issued shares of a class did not consent to such variation or vote in favor of the special resolution for the variation, they may apply to the tribunal to have the variation cancelled. So students, थ्री-फोर्थ का अप्रूवल चाहिए जब अगर उनको वेरिएशन कराना है शेयर होल्डिंग में, शेयर्स में. सो इफ दे डू नॉट अप्रूव, ठीक है, तो थ्री-फोर्थ को कराना एंड रिमेनिंग डजंट वांट टू,
अगर not less than 10%, like 10% से ज़्यादा के जो भी शेयर होल्डर्स हैं अगर वो अपना कंसेंट नहीं देते, so they can also go to the tribunal to have the variation cancelled. They can also go to the court अगर they did not approve this variation. Students, for the video, these videos will be uploaded after some time, like probably in 10 days or 15 days. These videos will be uploaded on YouTube or on the SWL site, and then you can have a look at it. And in the meantime, I'll request everybody to go through the schedule. Like next class is day after tomorrow, 18th, then next is 20, and our time will be fixed, that is 10 to 11. So that's all for today. We will continue with the last section, Doctrine of Ultra Vires of MOA, and we'll start the next chapter in the next class. Thank you so much, and I'll suggest you to go through the notes and revise this class. Thank you. Yes, students, I can still answer your question and answers. I think live session is still continuing. So for OBE exams, so we will get a notification from the university whether your exams will be conducted OBE or normal offline exam. So far, as per the information, your exams will be conducted online, and that will be OBE. Don't worry, we'll talk about the question papers in the last classes. Um, in December classes, we'll be talking about the pattern of the paper. I've already published the link of chapter 4 notes as well. Just look at the starting chat. I've already published the links of chapter 1, chapter 2, chapter 3, and chapter 4. Book is Anil Kumar, I've already told. Students, you can join your next classes, and that's all for today's session from my end. Thank you.